161. In the triangle ABC, if ABC are in AP such that A less than B less than C, then it is necessary that, right? तो बस क्या triangle inequality use करनी है और कुछ भी नहीं है. So you know that A plus B is, oh, so like this, huh? तो अपने को ये type के ratios ढूंढने हैं. Oh, then you can maybe say, okay, fine, maybe A is just B minus X and और let's say कि ABC जो है वो इनफैक्ट ये है A plus X and A plus X plus Y, जहाँ पे X Y पॉजिटिव नंबर्स है. Then of course you will have triangle inequality. तो जो दो छोटे साइड्स है उनका सम से बड़े साइड से बड़ा होना चाहिए. That means A plus X is bigger than A plus X plus Y, right? And from that we have A is bigger than Y, right? That's all it's saying actually. Cool. So you know that A is bigger than Y. X के बारे में अपने को कुछ कंडीशन नहीं पता है. X can be anything. So yeah, I mean if A is bigger than Y, then what does that actually mean? That this is true. Okay, वो तो होगा ही. At the same time you also know like C और B बड़े हैं दोनों A से, तो C plus B obviously बड़ा होगा. Similarly C B से बड़ा है तो C plus A तो बड़ा होगा ही B से. तो बाकी दोनों इक्वालिटी तो अपने आप ट्रू हो जाएगी. So the only thing is that A is bigger than Y. All right. अपने को क्या क्या बोला है? अपने को बोला है B upon C, which is A plus X upon this thing, A plus X plus Y. So it's between 2/3 and 1. Okay. So B upon C. एक काम करते पहले C upon B की बात करते हैं. So C upon B is Y upon A plus X plus 1, right? So Y upon A plus X, but Y is smaller than A and you don't know anything about X though. X कुछ भी हो सकता है. X कितना ही बड़ा हो सकता है? Seriously? So let's try it out. Let's say अगर A 1 होता then X में भी 2 रख सकते थे अपन, right? Possible है ना कि A से बड़ा हो. Then this would be 3 और फिर यहाँ पे 3 plus, तो A से छोटा कोई तो भी नंबर. Okay, एक काम करते हैं A को 2 रखते हैं. So 2, then this would be 4 and then 4 plus something less than 2, that's 1, so 5. क्या ये काम कर रहा है? I think it does because yeah, like 6 is bigger than 5. Okay, obviously. So no problem with that. So it's definitely bigger than 1, right? C upon B is bigger than 1. Yes, and this is like A upon A plus X. अगर X infinity approach कर रहा है then this thing approaches 0, right? अगर X infinity नहीं approach कर रहा है, अगर it approaches 0, that gives us the maximum value. So C upon B का its minimum value is just 1 and maximum value is when X is 0. So it's just 1 plus Y upon A. But guess what? Y can be yeah, so Y is like less than A. तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा it's less than 2, right? Yeah, I think that makes sense. Right. So 1 is less than C upon B is less than 2. So यहाँ पे 1 upon 2 आया चाहिए था. So this didn't actually work out. B upon C is no, this is not correct. Okay. ठीक है, तो A और B तो correct नहीं दिख रहे because हमने yeah, so like this would be C upon B is नहीं ना यार, इसमें बोल रहे हो कि it's less than 3 upon 2. So ये necessary थोड़ी ना है. Necessary नहीं है कि वो 3 upon 2 से छोटा है. It is necessary that it should be less than 2, right? So ये condition सबसे टाइट कंडीशन है जो कि अभी तक अपन निकाल सकते हैं. That just falling like that. Okay, this is bad. This is seriously bad. उसके अलावा और क्या अपने पास में? So ये दोनों तो काम नहीं कर रहा है. B upon C का ऐसे नहीं हो रहा है. It's just C upon B जो कि इस टाइप से काम करता है. Okay. Right. C upon A की बात करते हैं. C upon A will be just C upon A. Yeah, so it's just A plus X plus Y upon, yeah, so what, 1 plus X upon A plus Y upon A, that is what C upon A is. So C upon A is
इसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी? मिनिमम वैल्यू रहेगी जब ये चीज 0 हो जाए, जो कि हो सकती है ऑफ कोर्स, एंड ये चीज भी 0 हो जाए, बिकॉज हाँ अपन y को 0 रख सकते हैं, राइट? सो अगर मैं y को 0 रखता हूँ, देन दिस विल बी जस्ट 1 एंड लेस देन मैक्सिमम वैल्यू के लिए y को मैं a रख सकता हूँ। आई नो रख नहीं सकते एक्चुअल में, बट गेट द आइडिया, अपन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ढूंढ रहे हैं। सो a रखूंगा तो ये 2 हो जाएगा, एंड x को तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। It's like 2 plus x upon a. No, 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 this is getting bad. What about b upon a though? B upon a is just a plus x upon a. Well, that's नहीं यार, अपने को x में कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा। x में क्या कंडीशन रहेगी? नीड टू फाइंड दैट, बिकॉज अदरवाइज ये काम ही नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स x इज पॉजिटिव, बट अदर देन दैट कुछ है उसकी नेसेसरी कंडीशन। अगर मैंने x को बहुत ही बड़ा रख दिया, फॉर एग्जाम्पल a1 नहीं a2 लो, x को मैं 50 ले लेता हूँ, तो 52। और हाँ यार, अपन जानते कि इनइक्वालिटी अपने आप काम करती है एंड एवरीथिंग। सो व्हाई इज इन दिस वर्किंग? x पे कोई कंडीशन नहीं है। सो ओके, abc आर इन ap, ओके दैट मेक्स सेंस। सो ये एक चीज मैं भूल गया था, but अगर ये AP में है, then x is the difference over here as well, x should be different. So yeah, then y is the same thing as x. So तुम basically बोल रहे हो that a is less than x and this thing is something like this. Nice. So yeah, अब अपन कर सकते हैं सब। Now b upon c, पहले c upon b ढूंढते हैं। So c upon b is a plus 2x upon a, which is 1 plus 2x upon a, right? So c upon b, that is, well, it's less than, okay, this isn't working. So c upon b, ठीक है ना, directly b upon c ढूंढते हैं in fact. So b upon c is equal to, oh okay, मैंने वो a plus x यहाँ पे मिस कर दिया गलती से। फिर it's just, ठीक है, वापस c upon b ट्राई करो। c upon b is 1 plus, तो yeah, it's a plus x, and then it's x upon a plus x, like that, which is what, 1 plus 1 upon a upon x plus 1, something like that, right? Will this work? So as you can see कि जैसे जैसे x बड़ा होता है, ये चीज छोटी हो जाती है, that means ये पूरी चीज बड़ी हो रही है। So as x increases, c upon b also increases. Okay, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगी? a, जब वो रहेगा then it's just 1 plus 1 upon 2, which is 3 upon 2. So c upon b is less than 3 upon 2. And at the same time, मिनिमम वैल्यू x की क्या रहेगी? 0। जब ये पूरा इन्फिनिटी चले जाना, हाँ ठीक है, जब ये पूरा इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, oops sorry, मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, हाँ, x equal to 0 is the minimum, right? It is in fact the minimum, right? So it's going to be 1 when x approaches 0, ये चीज approaches 0, it's correct. So b upon c is less than 1, it's bigger than 2 upon 3. So a is correct, 161 का a correct है। Okay, a is correct. Similarly अपन दूसरा देखते हैं, b upon c. So b upon c, that is, क्या वो सिर्फ रेसिप्रोकल नहीं है? तो वेट, इज द सेम थिंग एज दैट, हाँ? तो नहीं है, तो फिर इनकरेक्ट हो गया। और c upon a, c upon a, it's like a plus 2x upon a, huh? So that's just 1 plus 2x upon a. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम इज, so c upon a is less than, maximum is 3 and it's bigger than, जब x 0 होगा it's just 1. So yeah, no, it's not correct. Okay, it's not less than 1. Come on, we know c is bigger than a, so c तो incorrect हो गया. Let's go for d. So b upon a is bigger than 1, it's less than 2, huh? B upon a, yeah, correct, because x is less than a, so yes, it's less than 2. Cool, so that works. A and d. Next.
162. Let I be equal to this integral, then I is, so 3 plus x power 5 upon 2. It starts off at 1 और फिर 3 तक जाएगा. So okay, this is 5 upon 2 you say, huh? Square root. जब ये 1 रहेगा then just square root of 4. okay, वो तो okay है. 1 till 3 कोई squares नहीं आ रहे, right? Oh, that's a bad thing. Till 3 there's no squares. So we know that this is bigger than from 1 to 3. Just wait a second. Okay, sorry. कहाँ पे था? Right. हाँ, बस interruption हो रहे बहुत आज. So like x power 5 upon 2, it's bigger than or equal to 1, right? So this thing is bigger than integration of 2 basically. So that's 4. So this is greater than 4 for sure. So 162 का A तो correct है. Wait, what is greater than 2 square root 3? ये भी अपने को check करना पड़ेगा. Greater than 27 doesn't look like it because yeah, एक काम करो, इसको graph करने का try करो. So it starts off at 2. So no, actually 1 पे ये 2 रहेगा. 1 पे ये 2 रहेगा and then 3 पे कुछ अजीब वैल्यू रहेगी इसकी. 4 पे इसकी कोई अच्छी वैल्यू होती है because 4 पे क्या कहा था? Oh wait, okay, 3 पे कुछ अलग हो रहा है, right? 3 पे हो रहा है 3 plus 3 power 5 upon 2, that's like 9 square root 3 something. Okay. 2 square root 3 कैसे, मतलब क्या? अच्छा 4 पे क्या हो रहा है? 4 पे it's 2 power 5, so 32 plus 3, that's 35. That's definitely not. ठीक है, 3 पे इसकी जो भी वैल्यू होगी. और मुझे देखना है इसकी कॉन्केविटी किस टाइप की है, तो वो मैं इसे देख सकता हूँ. इसका सेकंड डेरिवेटिव ऑब्वियसली. सो yeah, I mean square root में है, so it's not that complicated, is it? Whatever, 2 square root of 3 plus x power 5 upon 2, then 5 upon 2 x power 3 upon 2 like this, and then yes, it's like 5 upon 4 x power. ये इसका first derivative, right? X power 5 upon 2. Cool. Just want to change this a bit. इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं, रहने दो, नहीं करते. ओके, इसका सेकंड डेरिवेटिव ढूंढना है अपने को, तो ये अभी के लिए साइड में रहने दो, फिर इसका इतना ही देखते हैं. Then it will be 3 upon 2 x power 1 upon 2 upon square root of 3 plus x power 5 upon 2, and then फिर नीचे वाला डेरिवेटिव, so it's to the power of negative 1 upon 2, right? So that comes on the front, negative 1 upon 2 x power 3 upon 2, और ये हो जाएगा अब इसका क्यूब रूट. So yeah, like 3 plus x power 5 upon 2 की power 3 upon 2, and then अंदर का डेरिवेटिव, so 5 upon 2 x power 3 upon 2 like this. So first of all, x power 1 upon 2 upon square root of 3 plus x power 5 upon 2 कॉमन ले रहा हूँ, and in fact 1 upon 2 भी यहाँ पे कॉमन लेते, so in fact 1 upon 4 कॉमन ले लेते, you know. Then this is just 6 over here and minus 5 x power 3 upon 2 upon 3 plus x power 5 upon 2 का पावर 3 upon 2. cool. तो कौन सा बड़ा है, 3 plus x power 5 upon 2 का पावर 3 upon 2 या फिर x का पावर 3 upon 2? It's like 6 minus 5 into x upon 3 plus x power 5 upon 2. Look, ये कहाँ से कहा जा रहा है, 1 to 3, right? So then this thing is always less than 3. But ये तो 3 से बड़ा है. That means it's like something less than 1. Or that to the power of 3 upon 2. That's clearly less than 1. So 6 minus something less than 5. So it's positive. So second derivative positive इसका मतलब है कि इसका जो slope है that is increasing. So its concavity is something like this, I think. Yeah, hopefully.
हाँ, इसके थ्रू आउट ये ऐसा ही हो रहा है कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट, और फर्स्ट डेरिवेटिव तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, सो नाइस। या इन दैट केस जो एक्चुअल ये जिस चीज से बड़ा रहेगा दैट इज इन फैक्ट दिस थिंग, यस दैट्स करेक्ट, वेरी करेक्ट, एंड इट्स लेस देन दिस ट्रेपीजियम, राइट। तो ये ट्रेपीजियम का एरिया कितना है, इट्स जस्ट ये साइड, तो 1 पे है इसका 2, 2 वैल्यू है, 3 पे, ओके 3 पे क्या है, 3 प्लस 3 पावर 5/2 विच इज 9 स्क्वायर रूट 3 समथिंग लाइक दैट, और ये डिस्टेंस कितना है 2, ओके कूल। और फिर उसका आंसर, सो या दिस इज जस्ट गॉन, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 9 स्क्वायर रूट 3, seriously, okay something like that, so it's less than whatever this thing is. क्या ये चीज लेस देन 26 है? Well, that's the same thing as saying कि 3 plus 9 square root 3 is less than 24 का square, right? Yeah. In other words, 1 plus 3 square root 3 is less than. So 3 gaya 8 into 24, which is 16, and 32 is 212, I think. Oh, come on. 3 square root 3 is less than 211. Yes, it is, in fact. So, ये तो by ये तो बहुत हद तक फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ये काफी काफी छोटा है, सो सी इज डेफिनेटली करेक्ट, ए इज ऑल्सो करेक्ट। इज इट ग्रेटर देन 2 स्क्वायर रूट 3? आई हैव नो आइडिया, वो तुम कैसे ढूंढ लोगे मुझे नहीं पता। इन लोगों ने कैसे किया कि ये लेस देन 26 है? ऐसा कोई नंबर जिसका पावर ऑफ 5/2 और समथिंग, 3 power 5/2, that is 9 square root 3, 9 into 1 point something. So अगर 9 के पहले कोई तुम नंबर ढूंढ लो, देन हाँ राइट, ओके नाउ आई एम गेटिंग, तुम लोग क्या किया होगा, उन लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ 9 लाया होगा, मतलब कि x पावर 5/2 जब भी 6 होता है, राइट, वो सेम चीज अगर मैं इस टाइप से कंटिन्यू करूँ, सो दैट वुड बी द थिंग, बिकॉज लुक एट इट, ये डाउनवर्ड है, राइट, तो ये इतने एरिया से तो बड़ा होगा, ओके दैट्स ऑब्वियस। ये ऐसे प्रॉपर मुझे एक लिमिट थी जो कि इससे whatever, so it's definitely less than 26। मुझे नहीं पता इन लोगों ने कैसे लाया, कैसे लाई ये वैल्यू, बट है, एंड 2 स्क्वायर रूट 3 इट्स स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, 12। हाँ, ये ए और डी थोड़े, ए तो क्लियर कट अपने को दिख रहा है, बट डी अपने को पता नहीं है कि क्या वो ग्रेटर देन दिस थिंग है कि नहीं है, whatever. So I'm just going to go for A and C. Next, 163. If there are three square matrices A, B, C of the same order satisfying the equation A squared equal to A inverse, and then let B equal to A to the power of 2 power n, and okay. If the following statements are true, same order. Wait, what? Oh, okay, so, okay, fine. Satisfying the equation A squared equal to A inverse. A squared is equal to, I mean, that's the same thing as saying A cubed is equal to identity matrix, right? Because look at this, A into A square equal to identity matrix, and A square into A is identity matrix. So A square obviously A inverse हो गया, तो ये चीज और ये चीज दोनों सेम है, राइट? सो A ऐसे एक मैट्रिक्स जो कि सेटिस्फाई करता है, एंड B is A power, okay, A to the power of 2 power n, right? Okay. And C is this thing, then so the following statements is not true. Okay, I'm getting it. 2 power n minus 2, huh? So 2 power n minus 2, let's say it's like 3k plus r, जहाँ पे r, okay, this is just rubbish. You know ये plus minus 1 होता है, it's not a multiple of 3 and everything, you just know it, okay? Should just say plus minus 1.
तो फिर ऑफ कोर्स 2 पावर n जो रहेगा जस्ट 4 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, सो इट्स जस्ट 12k plus minus 4, which is 3 times of 4k plus minus 1 plus minus 1, so it's still something like 3 times m plus minus 1. तो right, दोनों basically, or I should probably say it's like plus 1 or plus 2. तो यहाँ पे भी plus 1 और plus 2 ही करना पड़ेगा. अब वो कैसे तो तुम वो लोग देख लोगे यार. And what that means is कि yeah, that A और B जो सॉरी B और C जो है इनफैक्ट वो सेम ही चीज़ है, बिकॉज दिस इज जस्ट, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 4 आ गया एक्स्ट्रा एक्स सिर्फ, राइट, क्योंकि 2 पावर n माइनस 2 टाइम्स 4 इज 2 पावर n. अब वो जो 4 है उसको, उसमें से अपन 3 तो हटा सकते हैं और फिर जो 1 बचेगा दैट्स लेफ्ट राइट देयर. वेट व्हाट, नो 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 नहीं, हाँ करेक्ट, राइट, वेरी करेक्ट. वो जो 1 रहेगा वो 2 पावर n से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो सेम ही चीज़ होगी इनफैक्ट. दैट मीन्स कि C और V जो है वो इनफैक्ट सेम चीज़ है. सो डिटरमिनेंट ऑफ P माइनस C इज 0, वेरी करेक्ट. B must be equal to C. Yeah. P plus C into B minus C equal to 0. Yes, because yeah, P minus C तो 0 है ना, तो 0 times 0 के ऊपर कोई और एड्रेस अप्लाई कर रहे हो, इट्स ऑलवेज 0. सो E must be equal to C. Yes. All work A, B, C. Next, 164. The probabilities of events A intersection B, A, B, and okay, are in AP with the probability of second term equal to the common difference. Therefore, the seriously, second term is equal to common difference. इसमें 4 टर्म्स है, राइट. A इंटरसेक्शन B, A, तो वो तो कॉमन डिफरेंस ही हो जाएगा. ओके, बट दैट मीन्स इज लाइक A इंटरसेक्शन B है ही नहीं. ओह ओके, सो या दीज आर लाइक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बिकॉज एक मेरा तो दूसरा हो ही नहीं सकता. आर दीज इंडिपेंडेंट? आई मीन आई डोंट नो यार. अगर A हो रहा है तो फिर B नहीं हो सकता ना. दैट मीन्स ओके, दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट एक्चुअली, such that one of them must occur. Oh, क्या probabilities is next? Okay, let's do it. So A intersection B की probability 0 है. A की probability पता नहीं कुछ तो होगी P. B की probability क्या है? 2P. And A union B, that has probability obviously 3B. Sorry, 3P, right? Therefore A and B. तो जरूरी नहीं है कि it's that one of them must occur. जरूरी नहीं है ऐसा. Such that one is twice as likely to as the other. Yes, that's very correct. So 164 का D and AB or DB. Next, 165. Let x1, x2, x3. Sorry, x1, y1, x2, y2. Okay, ठीक है. Be respective the vertex of a triangle. यार यहाँ पे ये D को क्यों लेते? Okay, triangle ABC. Then okay, these are vertices of a. Okay, x1 minus x2 into x1 minus x3 is a positive. Then angle A is acute. Hey, okay, I get it. So ये जो चीज़ है इसको ऐसे मत देखो, इसको well x1 minus x2, that's what kind of vector is this? So ये अपना let's say ये A है, ये B है, ये C है. So x1 minus x2 यानी तुम A से B जा रहे हो, ये वेक्टर, ओके, एंड दैट वेक्टर के साथ में तुम मल्टीप्लाई करोगे x1 minus x3. तुम ये वेक्टर की बात कर रहे हो? नो सॉरी, तुम उल्टा जा रहे थे. सो ऐसा. सो या अगर ये डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव है देन यस, एंगल ए इज एक्यूट, वेरी करेक्ट. सेम काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे है ऑब्ट्यूज, सो नहीं. Oh wait, अच्छा ये अगर नेगेटिव है देन यस, दैट्स ऑल्सो करेक्ट.
x1 minus x2, ठीक है, is 0, then yes, so ABC, right, is square root 3, that angle A is 60 degrees. Come on yaar, itna, wait, what, square root 3? That doesn't make sense. No, 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 तुम्हें हमें साइड्स दी क्या? तुमने हमें साइड्स नहीं दी है यार, तो मैं नहीं कह सकता कि क्वेश्चन में क्या है, बिकॉज ये इन लेंथ पे भी डिपेंड करेगा ना. So D is rubbish, but A, B, C work. Next, 166. Okay, a circle passes through the points. Okay, 3 points here. The points on this circle, the tangent at which is parallel to the straight line joining the origin to its center. So tangent parallel to the straight line joining origin to its center. इसको ट्राई करो यार ग्राफ करने का. 0,6, huh? That is something like that. 5,5. Like this maybe. Okay, and negative 1,1. Somewhere over there. I'm guessing कि ये 90 डिग्री रहेगा 0,6 पे, but let's try it out. So 0,6 to 5,5 slope कितना है? It's it's 1 upon -5. So -1/5. और यहाँ से यहाँ slope कितना है? It's 5 of course. So cool. ये जो है 90 डिग्री है. That means ये जो मिड पॉइंट रहेगा ये got it of course. So ये डायमेट्रिकल पॉइंट्स हो गए अपने. व्हाट्स द रेडियस? अपन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? -1,1 से इस लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर आई थिंक, व्हिच इज व्हाट 2 स्क्वायर रूट ऑफ, no, that's not correct. The points on this circle, the tangent at which are is or are parallel to the straight line. ठीक है ना यार, अपन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, राइट? ऐसा नहीं है कि अपन नहीं कर सकते, बट बहुत घटिया सा है ये. द थिंग इज, अगर अपने को टेंजेंट इस लाइन से पैरेलल चाहिए, पहले तो अपन ये पॉइंट ढूंढ ही लेते ना. ये पॉइंट क्या है? इट इज 2,3. तो ये स्लोप जो रहेगा दैट्स जस्ट 3/2. तुम ये सर्कल ऑब्वियसली ढूंढ सकते हो. इट्स जस्ट x plus 1 into x minus 5 plus y minus 1 into y minus 5 equal to 0. So this is basically what x squared plus y squared minus 4x minus 6x -5 +5. तो ये तो गया. Wait, what? -5 +5. अच्छा, ये 0 के थ्रू पास हो रहा है. Well, that's nice. So अगर ये 0 के थ्रू पास हो रहा है then oh yeah, ठीक है. सिर्फ जो लाइक ओके, तुम बता सकते हो कि किस टाइप का एक्शन है. सिर्फ जो परपेंडिकुलर लाइन रहेगी इसकी, वो जो पॉइंट्स रहेंगे अपने को वो पॉइंट्स ढूंढने. दैट्स ऑल यू एक्चुअली वांट टू डू. तो ये स्लोप कितना था? 3/2, राइट? ये स्लोप कितना रहेगा? दिस विल जस्ट बी -2/3. सो -2/3 इक्वल टू y minus 3/x minus 2. So 3 times of y minus 3, which is 3y minus 9, plus 2 times of x minus 2, which is 2x minus 4, is equal to 0. ये अपनी लाइन हो जाएगी, which is 2x plus 3y equal to 13. That is our line. अब अपने को सिर्फ ये देखना है कि ये कब कब इंटरसेक्ट करता है सर्कल से. then will be done basically. राइट, ठीक है, वो अपन ढूंढ लेंगे. उसका क्या करना है ऐसे? फाइन. Oh well, this is really bad. Do we really have to do this? Oh wait, what? 2x plus 3 y. X squared plus y squared equal to, well, it's just 2 times of that, so it's just 26.
दैट इज नाइस. तो आई मीन ऑब्वियसली ये इस टाइप का एक सर्कल है जहाँ पे राइट ये जो 2 पॉइंट्स हैं दैट एक्चुअली डज वर्क यार. नाइस. बट स्टिल अपने को पॉइंट्स ढूंढने हैं, अपने को सर्कल नहीं ढूंढना है. या करना तो पड़ेगा ही और कोई तरीका नहीं है. मल्टीप्लाई बाय 4 मे बी. सो 2x का स्क्वायर प्लस 2y 4y स्क्वायर equal to let's see 4 times of this thing. So 8 and 24 just 104, and then 2x is 30 minus 3y, so 13 square is just 169. Then minus 2 into 3 into ये बहुत लंबा है. 26 into 3 that is 78 I think. No, 98 what? 6 and 18. Yeah, that's 78. Okay, 78y. Then plus 3y, so it's 9y squared. And then plus this thing, so like 13y squared actually. 13y squared, that's equal to 104, huh? So y squared minus, this is not actually a multiple of third. Oh, it's 78, right? It is. It's just 13 times 6, of course. 6y plus 13 is equal to, so you get the 13 times 2 times 4, so it's 8. So y squared minus 6y plus 5 equal to 0. So y is 1 or 5. Cool. And that means x is, so अगर y 1 है then x is 5. अगर y 5 है then x is negative 1 because yeah. तो मिल गए अपने को पॉइंट से मिल गए. इनफैक्ट it's just 5 comma 1 and 5 comma negative 1 comma 5. Okay, so D and B and D, there we go. 167. Okay, a tangent to this ellipse at point P meets the lines x equal to plus minus 5 at the points Q and R. Then a circle whose extremities of diameter are R and Q is okay, it passes through a fixed point whose coordinates are. इसका एक tangent at some point P meets the line x. Okay, I'm getting it. अच्छी से ड्रॉ करूँगा इसको. So suppose ये अपना ellipse था. ये चीज 5 थी, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं. Yeah, now this looks good. तो ये अपने जो लाइंस थे x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -5. ठीक है, ये एक कोई भी टेंजेंट है जो कि इन दोनों को मीट कर रहा होगा एट सम पॉइंट P को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा बेटर लगेगा. राइट. Q and R. So this is P, this is Q, this is R. Okay, I know क्या बोलने वाला है ये कि ये एक फोकस पे 90 डिग्री सेपरेट कर रहा है. दिखाओ, ये अपन ऐसा वर्क किया ना. Circles whose extremities of diameter are R and Q. Whose extremities of diameter are R and Q. And Q, okay, is it passes through a fixed point whose coordinates are, yeah, focus which is 3,0 and -3,0. So A and B. अपन ये हर बार सॉल्व किया, एटलीस्ट उसका फायदा तो हो रहा है कुछ. सो या इनफैक्ट ये चीज 1000 बार तुम्हें मिलने वाली है. लोग पूछने वाले हैं कि ये कैसे था. द थिंग इज कि जो फोकस है वहां पे 90 डिग्री सेपरेट कर रहा है. हाउ डू आई नो दिस? मैंने पहले भी एक बार डिराइव किया हुआ है इसलिए. नेक्स्ट 168. If sin inverse x का स्क्वायर प्लस sin inverse y का स्क्वायर प्लस sin inverse z का स्क्वायर इक्वल टू 3 pi square 1. Oh yeah, okay, it's that kind of question. So sin inverse x कहाँ से कहा जाता है? -pi by 2 to pi by 2, right? तो sin inverse x का स्क्वायर it goes from 0 to pi squared upon 4. तो ये सारे pi squared upon 4 हो गए, तभी ये 3 pi squared upon 4 सकता है, क्योंकि उससे बड़ा कुछ रहा तो किसी को छोटा होना पड़ेगा.
सॉरी, उससे कोई छोटा रहा तो फिर किसी को बड़ा होना पड़ेगा, which is impossible. So yeah, that's it. सारे pi square upon 4 है, that just means x has to be plus minus 1, y has to be plus minus 1, z has to be plus minus 1. The value of x minus y plus z, it can be, well, so क्या क्या हो सकता है ये, अगर तुम्हारे पास में लेट्स से 2+1 आ गए और एक नहीं, काम करते सारे प्लस वन से स्टार्ट करते तो फिर वो 3 होगा, फिर 2+1 एक -1, देन वो 1 होगा, उसके बाद में -1 आएगा, उसके बाद -3 आएगा, दैट्स इट. ओह, सारे वैल्यूज इसमें आ गए, 1 -1 3 -3, सो ए बी सी डी. नेक्स्ट 169. दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, सो कोसाइन x कोसाइन 2x, यहाँ पे क्या चीज है, why is that in the square root? This doesn't make sense. Okay, maybe think about it. So it's like cosine x square root of 2 cosine square x minus 1, right? Dx. Cool. We can write this thing as secant square x. अब ये दूसरा secant x कहाँ से आया, यहाँ से आया. It's going to be square root of 2 minus secant square x, like this. Dx. And then you know integration of dt, जहाँ पे t is just tan x, और यहाँ पे आ जाएगा square root of, well yeah, so secant square x minus 1, that is tan square x. It's just 1 minus tan square x. Isn't that it? 1 minus t squared. So ये तो easy है यार, ये सिर्फ sin inverse of t रहेगा. And sin inverse of what? Sin inverse of tan x basically. And that isn't that hard actually, because, oh wait, what? Sin inverse of tan x. Oh okay, this is hard. Yeah, well, हाँ तो a तो obviously correct हो गया. Okay, cot inverse of whatever, तो tan x you say, sin inverse tan x 1, yeah, and ये थीटा है फॉर एग्जांपल, ये चीज थीटा है, देन sin थीटा तो ये है. ओके कूल. एंड यू वांट कि ये किस चीज का कॉट इनवर्स है. व्हाई इज द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल दैट स्टफ, आई डोंट नो यार. इट्स लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus tan square x. So cot of theta, that's just this upon that, right? So it's cot inverse of square root of 1 minus tan square upon that. So it's just cot square x minus 1, right? Right. Hey, we can write it differently. We can write this as cosine 2x. Oops, cosine 2x. Cos c square minus s square upon s square. और फिर वो s square नीचे जाके हो जाएगा upon sin x. So yeah, this also actually works. So B also works. और क्या, cosine inverse of tan x, but cosine क्या है? No, it's not like that. It's cosine inverse of square root of minus tan. Yeah, so this doesn't work. Negative sine inverse of tan x. No way. नहीं आया था मेरा ऑप्शन. Next, if A, B, C are in HP, then okay. If A, B, C are in HP, then okay, these are in HP. Okay, this is the worst thing. So you know कि 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C are in AP, right? What is this thing seriously? These being HP, well that actually just means that B plus C minus A upon, yeah, so it's actually very doable because it's just B plus C plus A minus 2A upon A, और फिर वो क्या B plus C plus A upon A minus 2 हो जाएगा, and then we can just yeah, we can manipulate this thing to get it done. So अगर ये AB में है, then of course summation of A upon A, summation of A upon B and so on, ये भी AP में रहेगा, and then just subtract 2 from each term, still difference same है तो AP में है. So yeah, A works perfectly.
What about b? So 2 upon b equal to, well, that actually just means that 1 upon b is the middle term. So तुम बोल रहे हो कि 1 upon b minus a, 1 upon b और 1 upon b minus c a b में. How? Doesn't make sense यार. नहीं, ये अजीब है. ऐसा क्यों होगा भला? नहीं यार, ये तो अजीब है. ऐसा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. ये घटिया सा था. ओके, इसमें से लिख देता हूँ डी आर इन ए पी. नेक्स्ट है सी. सो a minus b upon 2 b upon 2 and c minus b upon 2 are in gp. What? A minus b upon 2, huh? So what you're saying is that b upon 2 का square, that's equal to a minus b upon 2 into c minus b upon 2. Okay, why should that be? नहीं, मुझे तो कोई रीजन नहीं दिख रहा ऐसा कुछ होने का. It's almost the same thing as asking कि 1 upon b का square is equal to 1 upon 2a minus b into 1 upon 2c minus b. I don't know. मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ होना चाहिए. Come on यार, ये क्या है? You know what? From now I'll just say कि 1 upon small b है जो capital B रख दो. So capital B square is equal to 1 upon 2 upon capital A minus 1 upon capital B, and then 1 upon 2 upon capital C minus 1 upon capital B. ऐसा बोल रहे हो? लग तो नहीं रहा मुझे. So ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाने के बाद में it's just AC times B square, right? और यहाँ पे क्या है? 2B minus A and 2B minus C. So you are saying this thing. Well, that's the same thing as this, and right, so it's like 4B square minus A plus C times B plus AC is equal to AC. ये चीज बोल रहा है basically. तो basically तुम ये चीज बोल रहे हो. That basically means, okay, ये तो गया है, तो B तो गया. So 4B equal to A plus C. That's not wrong. Sorry, that's just wrong because. Oh, sorry, यहाँ पे 2B चाहिए था. Okay, then it's correct because 2B equal to A plus C. Correct, right? Correct. ये तो already AP में थे ना. So capital A, capital B, capital C AP में थे. And that's why this is correct. So okay, unexpectedly ये चीज correct है. ठीक है. A correct है, C correct है. Let's also try B in that case. क्या पता वो भी इसी टाइप का कुछ तो भी हो जो अपने को एक्चुअली सॉल्व करना हो and not just figure out. So what you are saying is that 2 capital B equal to 1 upon capital B minus 1 upon capital A plus 1 upon capital, ठीक है, just see this, AB or A minus B. In other words, 2 is equal to A upon A minus B plus B upon C minus B. I mean, why? Okay, so 0 is equal to, अगर मैं minus 1 करूँ, then this would just be B upon A minus B. Sorry, it should not be B, it should be C. और फिर ये चीज़ -1 that would have been B upon C minus B as well. तो तुम basically बोल रहे हो that 1 upon A minus B plus 1 upon C minus B is equal to 0, right? Which, yeah, so it's like the same thing as saying कि C minus B plus A minus B is equal to 0. Hey, that is true actually. So yeah, this is also true for some reason. It is. It really is. मैंने यहाँ पे कई ऐसे अजीब टाइप की मिस्टेक की है, मुझे तो नहीं लगता, मिस्टेक की. So you're right, B is correct and C is correct, and what about this guy? Well, okay, ये तो obviously true है.
दिख ही रहा है ये, इसे जैसा ही बस तुम्हें मैनिपुलेट करना है तो फिर सॉरी या सो ए बी सी डी तीनों सॉरी चारों ट्रू है. नेक्स्ट 171. 171 is let f of x be equal to sine inverse of mod of sine x plus cosine inverse of cosine x. Which of the following statements is or not true? Sine inverse of mod of sine x, huh? Okay. Cosine inverse of cosine x. ठीक है यार, ये अलग अलग अपने को इसमें देखना पड़ेगा. So f of 3. तो f of 3 क्या होता है पहली बात? It's sine inverse of sine of 3 and 3 is more than pi upon 2. Oh, this is worst. This is just the worst thing ever. So mod of sine x. God. Okay, sine of 3 it is positive, yes, but उसको फिर भी चेंज करना पड़ेगा. So भी pi minus 3 वो चीज sine inverse of that, yeah. So pi minus 3 plus and then what? Cosine inverse of cosine x. So oh god, वो तो नेगेटिव हो गया. But हाँ, at least वो range में है in fact. So 3 is in the range. So just plus 3. Oh, this is gone. So f of जब मैं pi इसमें put करूँगा then sine of pi 0. Sine inverse of 0, that's 0. So 0 plus and then cosine inverse of cosine pi. Yes, that is pi. So yeah, A is correct. Let's go for B. F of x is periodic with fundamental period 2 pi. But fundamental, okay, this is bad. I mean, okay, sin x cosine x periodic है, that is correct, but जैसे कि अब हमने अब ये भी देखा f of 3 जो था that was okay. So in fact एक काम करो, जो भी कोई भी एक एंगल ले लो जो कि pi upon 2 pi है, right? So theta belongs to pi upon 2 pi. ऐसा कोई भी एक एंगल ले लो और डालो f में, क्या मिलेगा तुम्हें? F of theta that's just equal to so pi minus theta of course, right? Sine inverse of sine वो क्या हो जाएगा? Pi minus theta and then plus cosine inverse of cosine. So it's not be the same thing as theta. Ha! It's always pi. God, it's a constant. तो ये b तो पूरा यानी ये बेवकूफी है. It's I don't know यार, ये तो यहाँ पे तो ऐसे constant टाइप का है and I don't know. ओके वो एक पर्टिकुलर रीजन में कॉन्स्टेंट, ये मतलब नहीं कि वो पीरियोडिक नहीं हो सकता. हो सकता है वही सेम रीजन की सारी चीजें वापस रिपीट हो रही हो एंड दैट डज हैपन यार. ओके या देन इट्स पीरियोडिक इफ नॉट, आई मीन या 2 pi is a period, sure, but it's not the fundamental period, is it? कोई और पीरियड भी हो सकता है ना, right? Okay, let's say for example अगर अपन pi put करते, so instead of x we will just put pi plus x, then ये हो जाएगा sin inverse of sin pi plus x. Well, yeah, that's negative sin x and okay वो तो सेम ही चीज हो रही है. So it's sin inverse of sin x. Oh, that is weird. और cosine inverse of ये चीज that hey okay, this will work if and only if x was like no, okay, this doesn't actually work. Cosine inverse of something negative. So ठीक है, pi period नहीं है, but इसका और कौन से इसे नहीं, then okay, then you have to go for period 2 pi. So मैं भी यूज करने वाला हूँ, but मुझे नहीं पता एक्चुअली सही है कि नहीं, मैंने प्रूव नहीं किया है. Unless and until मैं ग्राफ करूँ ये तो should I actually graph this though? Maybe I should, who knows? You know what? Just do it. I'll just graph it. In fact, yeah, so मुझे 0 to pi graph करना है, right? So it shouldn't be that hard. Okay, so we start off at 0 to pi upon 2 तो बहुत easy है. It's just x basically, right? So sorry 2x and then it's just increasing. यहाँ पे ये pi value gain कर लेता है.
ओके उसके बाद में क्या, एज इट गोज फ्रॉम पाई बाय टू टू दैट, राइट, ये पाई कांस्टेंट था, याद आ रहा है? ओके यहाँ पे अब पाई पे आ गया अपन। अब what I think is the pi to 3 pi by 2 अलग चीज होगी, so let's go from pi to 3 pi by 2. In that case, sine inverse of sine x, right? uh yeah, well, sine is negative, but it's the same thing as that actually. So if pi, you सोच सकते हो कि ये पाई प्लस कुछ तो भी है, देन साइन इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स, दैट इज दैट कुछ तो भी, यानी कि क्या, एक्स माइनस पाई प्लस कोसाइन इनवर्स ऑफ कोसाइन एक्स, वेल इट्स नेगेटिव एंड स्टफ, यस, बट तुम्हें इसको फ्लिप करना होगा अबाउट एक्स एक्सिस, राइट, उस एंगल को, एंड दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड एक्स माइनस पाई, यानी कि वो जो छोटा सा एंगल रहेगा बचा हुआ अदर देन पाई, राइट, फिर तुम इसको निगेटिव करोगे, तुम्हें उल्टा जाना है, एंड देन तुम इसको पाई में ऐड कर दोगे, सो इट्स एक्चुअली जस्ट 2 पाई माइनस एक्स, yes, that makes sense. So 2 pi minus x, so there we go, 2 pi minus x. Hey, it's the same thing, it's still the same thing actually, it's still just pi. How is this happening? I have no idea यार, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, ये अभी भी पाई है, and then it goes on till 3 pi by 2, और अब तो चेंज होगा ना यार, अब 3 pi by 2 to 2 pi अपन जा रहे हैं, so the fourth quadrant, it's what sine inverse of sine, like negative x actually, so it's like 2 pi minus x, yeah, exactly, 2 pi minus x, right. So अगर सिर्फ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स होता तो ये x माइनस 2 पाई होता, बट अभी ये 2 पाई माइनस एक्स रहेगा, सो 2 पाई माइनस एक्स प्लस, ओके, कोसाइन इनवर्स ऑफ कोसाइन एक्स, सो कोसाइन एक्स क्या होगा, इट्स नेगेटिव, नो इट्स एक्चुअली पॉजिटिव, एंड yeah, we just want in the first quadrant, तो ये भी in fact 2 pi minus x हो जाएगा, so it's also just 2 pi minus x. So oh wow, this is very weird. Yes, so it's 4 pi minus 2x, और अपन start कर रहे हैं 3 pi by 2 से, so we are starting from pi and then it's the same slope as this thing, तो तुम इस टाइप से जाओगे, right, and then finally at 2 pi तुम वापस 0 पे आ गए. Okay, this is that kind of a thing, और फिर ये 2 pi by repeat होता है, so as you can see this cannot be periodic, like this cannot have a period less than pi, right, possibility नहीं है, right, क्योंकि अपने को दिख नहीं रही है आपको डायरेक्टली, सही है ना, that just means yeah, B is correct. और क्या, f of x is neither even nor odd, no, it is in fact even, f of x is even, so C is wrong. Range of f of x is 0 to 2 pi. No, you can clearly see that f goes from only 0 to pi, इतने ही इसमें पूरा हो गया, so D is wrong, so that's it, A and B. Next, (172) solution of this, oh, so x dy by dx square plus, hey, why is this, oh okay, दो चीजें यहाँ पे at the same time, okay, why is this squared over there and not? This is not nice at all. dy upon dx is xy dash square plus y dash minus xy dash minus y is equal to 0. That's what you're saying. Factorizable somehow, maybe. So xy dash common, then it's just y dash minus 1. Yeah, actually it is in fact as well, because negative xy, right? Oh, it's the same thing. Come on. Okay, so xy dash y dash minus 1 and then plus y dash minus 1. तो बहुत ही अच्छा है यार, फैक्टराइज हो गया तो. The thing is xy dash plus y equal to 0 or y dash is equal to 1.
Well, this is the same thing as saying y equal to x plus some constant. और ये जो चीज है over here y dash upon y is equal to negative 1 upon x, right? So yeah, so integrating with respect to x क्या हो जाएगा, natural log of y equal to negative natural log of x plus some constant or whatever. That just means xy is some constant. So ये दो अपने solutions मिलेगा अपने को. xy is equal to 2. Yeah, it might be correct. Yeah, in fact it is correct. Cool. और दूसरा था that where is it? Okay, where did it go? Y equal to x plus c. So 1 comma 2, right? Yeah, then 2 equal to 1 plus c, so c has to be 1. So yeah, D is correct and B is correct. Next. The sum of the first 10 terms of an AP is equal to 155 and the sum of the first 2 terms of a GP is 9. If the first term of an AP is equal to the common ratio of, oh come on, the first term of GP is equal to the common difference of the AP. Okay, AP और GP generate करके देखते हैं. So first term of AP से वो A है, means like A plus D, A plus 2D whatever. और GP के लिए let's say पहला जो term है वो G है, and then it's GR square whatever. तुम क्या बोल रहे हो? तुम बोल रहे हो the first term of the AP is equal to the common ratio of the GP. तो A जो है that is equal to R. Okay, cool. So or you could just say R is equal to A. GA square whatever. And the first term of the GP is equal to the common difference of the AP. So oh okay, this thing is nice. Now this thing is equal to D. Right? First term of the GP is equal to the common difference of the AP. So it's going to be DA square whatever. Okay, और बोल रहा है कि sum of the first 10 terms of the AP is 155. So just 10 upon 2, 5 into 2A minus D. Yeah, 2A minus D plus ND. And in this case is 10. So just 10D like that. Yeah, and that's equal to 155. So basically what? 2A plus 9D is equal to 155.5 is 31, I think. So first equation, और दूसरा है sum of the first 2 terms of the GP is 9. So this plus that is 9. D times of A plus 1, that is 9. Cool. But hey, you know what A is and D isn't. Yeah, it's doable. Okay. ठीक है, करना ही पड़ेगा. तरीका थोड़ी है. Multiply by 2. It's going to be what? D times of 2A plus 2 is equal to 18. And then 2A is just 31 minus 90. So 31. Oops, पहले तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा. So D and then 31 plus 2 is 33 and then minus 90 is equal to 18. So D into 11 minus 3D is equal to, oh yeah, that's all we could actually do. So that's equal to 6. 11D minus 3D square equal to 6. 3D square minus 11D plus 6 is equal to 0. So 18, 9 and 2 of course. 3D square 3D square minus 9D minus 2D plus 6 equal to 0. So D minus 3 आ जाएगा ना, right? And then यहाँ पे आ जाएगा 3D minus 2 is equal to 0. So D is 3 और D is 2 upon 3. तो अपने पास में दो इनफैक्ट पॉसिबिलिटीज है. well in both this is A क्या रहेगा? So A will be, अगर D3 है then A is 2 और A is, so अगर D2 upon 3 है then A plus 1 equal to 27 upon 2. Oh, rho minus 1 is 25 upon 2. So दो possibilities अपने पास में. So first term of the GP is first term of the GP, that's just D basically. So D is 3 or 2 upon 3. So yeah, A is correct.
first term of the AP, that's A, and A is 2 or 25 upon 2. Oh, that's the same thing as common ratio as well, right? Because, yeah. So C is also correct. Common difference of the AP, that's D as well. That's, yeah, it's just 2/3 comma 3. So D also works. And yeah, that's all it is. Okay, cool. So और कितना बचा है? थोड़ा सा और है. I think I should make a different video, folks. So let's see you guys in the next video. तब तक के लिए bye.